Assalamu alaikum, everyone. Today, welcome to Hysab Kytab podcast today. And today we have a very special guest from a bank that has done exceptionally well in the digital banking space. So Shariq Mubeen leads the digital banking team at Meezan Bank, and it's a great pleasure to have him here. He's done some tremendous work in the industries. He's previously worked with the likes of Teradata as well and understands the whole ecosystem really well. So welcome, Shariq bhai, to our podcast. Gee, thank you so much, Hassan. Thank you so much. Yeah, so Shariq bhai, today the topic that we have is, there's a rise in neobanks, digital banks, EMIs coming, not just, of course, in Pakistan, but of course, globally as well, right? So what is your opinion on the rise of, no new sort of financial institutions that are coming into the market? How is that space advancing, not just in Pakistan but outside of Pakistan as well? Uh-huh. Sure. I think the rise of these FinTechs and neobanks or digital banks, whatever we call them, this has been a fantastic development over the last, I would say, 10 years or so. जो इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं ये जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं लाइक्स ऑफ मिजान बैंकिंग एंड ऑल अदर बैंक्स तो we now have realigned ourselves according to what really customers want today because पहले जो था वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट था या फिर जो कस्टमर सर्विस के अंदर जो गैप्स थे या फिर जो हमारी एजिलिटी थी या जिस तरह की हमें टाइम टू मार्केट चाहिए होता था वो चीजें we wouldn't care much about these things as banking industry I'm talking about but इनके आने के बाद obviously अब they have sort of jolted the entire industry और अब जो traditional banks भी हैं they have started to focus much more on customer service, customer experience, and all of these things. And I think this will improve the overall ecosystem when we come out and compete with these fintechs or these digital banks. Will improve our services along the way. So I think that is going to be really the customers are going to be the big beneficiary of this entire development. And what are the main differences, between an EMI, between a digital bank, and between a traditional bank? And how do you define each one of them in their particular space? So State Bank has, come out with EMI licensing framework a couple of years ago. Recently, they have also come out with digital banking license framework. तो उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली इनका जो स्कोप है वो डिफाइन किया है और जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो उनको तो दे कैन डू फुल स्केल बैंकिंग और जो EMIs हैं दे कैन ओपन अप वॉलेट्स एंड ऑब्वियसली जो उसमें एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि द वॉलेट्स हैव सर्टेन लिमिट्स how much deposit you can do, how many, how much of the transactions you can do in a month, and so on and so forth. And plus, the little drawback currently is that they cannot lend. So whatever deposits they are generating, they can obviously place them in some remunerative funds or somewhere with they can earn on the deposits. तो ये हो गया. उसके बाद जो डिजिटल बैंक आ रहा है चूंकि EMI के अंदर सर्टेन लिमिटेशन थी कि आप कितना अकाउंट जो है वो उसके अंदर डिपॉजिट रख सकते हैं और किस किस तरह की सर्विसेज कर सकते हैं. जो डिजिटल बैंक का लाइसेंस आया है उसके अंदर they have relaxed a lot of these requirements and it's more like a proper brick and mortar. जैसे आपका एक कन्वेंशनल बैंक होता है ये बिल्कुल उसी तरह का उनके पास the kind of services that they can do it includes everything. उसमें डिजिटल फुल बैंक लाइसेंस है जो कि बेसिकली दे हैव नो लिमिटेशंस. ऑब्वियसली लिमिटेशंस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू जो कि रेगुलेटरी होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट के हवाले से कि आपका जितना बुक आप उतना ही ग्रो कर सकते हैं जितना आपका कैपिटल होता है. तो वो सारी जो कि एक ट्रेडिशनल बैंक के ऊपर भी वो लिमिटेशंस अप्लाई करती है वो उन पर भी करेंगे. लेकिन इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे कैन डू एनीथिंग. और इसी तरह से डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस है उसमें भी they can do everything but they can only focus on retail
segment, which means they're individuals, so they cannot go into corporate banking, for example. So ये इसका डिफरेंस है। और जो सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस अगर आप देखें तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इट्स गोइंग टू बी ऑल डिजिटल, whereas हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर वी ओपन अप अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल Meezan बैंक, we have about close to 1000 branches. There are a lot of players coming into the market, right? जिसके अंदर अब is there room for 15, 20 players in the market, including traditional banks, EMIs, and digital banks? Or do you see Yeah, consolidation somewhere along the line as well? yeah, I think wonderful question. Definitely there is room for it. उसकी वजह ये है कि आज के दिन में भी there are 30 commercial banks, at least 30 commercial banks। और ये सिर्फ मैं आपको commercial banks वो बता रहा हूँ जो कि other than microfinance banks। So I don't know, 10-15 microfinance banks भी होंगे, शायद ज्यादा होंगे, I don't exactly know the number right now। So ये सारे बैंक्स मिलके पिछले 70 सालों में आपने कितना 15% पेनिट्रेशन की है बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान में अभी तक। तो ये बैंक्स तो काफी नहीं रहे। अगर ये बैंक्स काफी रहे होते, इन्होंने अपना पूरा पेनिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से किया होता कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कुछ बेहतर होती, तो हमें वो नजर आता। आज तो हमें वो नजर नहीं आ रहा। अगर आपके 230 235 मिलियन कितनी आबादी है, और उसमें से आप आज के दिन में भी हम ये बात करते हैं कि शायद 30 मिलियन यूनिक अकाउंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट फॉर न्यू प्लेयर्स। पाकिस्तान में अभी हर तरह का बैंक जो मौजूद है वो अपनी अपनी स्पेस में कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। So I think अगर इसी सवाल को हम आगे लेके चलें तो you look at a player like Easy Paisa, तो आपने कहा the market penetration is around somewhere around 15 to 20%. तो अगर हम Easy Paisa को देखें तो Easy Paisa has and Just Cash both have a very strong user base in terms of size in Pakistan. अब of course we know that Easy Paisa के पास digital banking का license की तरफ भी वो जा रहे हैं, तो that will affect the market, but I just want to get one or two sort of use cases from you कि अगर वो जाते हैं, for example, मैं Easy पैसा का user हूँ, right, from a remote village in Pakistan, अब उन्होंने कार्ड की ऑप्शन ले आई है, आप उसको नेक्स्ट लेवल में अडॉप्शन की तरफ कैसे लेके जाते हैं? बिकॉज चैलेंज इज अडॉप्शन, राइट? एंड आई थिंक वेरी राइटली सो आपने डिजिटल बैंक को सम अप किया है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजिटल चैनल्स के थ्रू पिच होंगी rather than being pitched through branches, right? But how do you get that layer of adoption to come now, right? Because they have the customer base, but now when you're going to go there and you have, I'm not sure, but I think it's the number is above 30-40 million users that they have. तो उस यूजर बेस को वो कैसे डिजिटाइज कैसे करेंगे और adoption कैसे आएगी, and how do you see that coming through, because that's where their role comes in. देखिए इजी पैसा ने तो ऑलरेडी दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो दे हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल, इजी पैसा, जैज कैश, बोथ ऑफ देम। तो उनके पास बहुत सारा कस्टमर बेस तो है, लेकिन आई थिंक देयर टारगेट वुड बी टू हैव मोर ऑफ एन एक्टिव कस्टमर बेस हु आर एक्टिवली यूटिलाइजिंग बैंकिंग सर्विसेज। एंड उसमें जो एक यू नो जो जब जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं या फाइनेंशियल वेलनेस की बात करते हैं, तो एंड स्पेशली इन रिमोट एरियाज और वो अंडर सर्व्ड एरियाज, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्सेस टू फंड्स। तो एक्सेस टू फंड्स मतलब लेंडिंग के अंदर इनको अपना स्केल अप करना होगा। ऑलरेडी वो लेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस नीड्स टू स्केल अप इन द बिगिनिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट वुड अट्रैक्ट पीपल when they would realize के जो their practices are very sort of say humane practices and very transparent, or above the surface kind of transparent practices, so they'll be able to attract a lot of customers because funding की need तो हर एक को है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना कस्टमर बेस ऐसा ऐसा बनता जाएगा, they'll be able to produce a lot of use cases which they'll be able to commercialize or monetize
वो इसी तरह से होता है कि यू नीड टू हैव फर्स्ट द क्रिटिकल मास, some number of active customers who who are very engaged with you, and then you can continue to come up with use cases जिसके अंदर आप उनको एंगेज भी रखते हैं, मोनेटाइजेशन भी करते हैं, कमर्शियली भी अपने आप को ग्रो कराते हैं उनके साथ। और उनके लिए भी जाहिर सी बात है कि एवरी यूज केस, whereas on the one hand it is a revenue making opportunity for the bank, but on the other hand it is some facility, some advantage, some unserved need, which is delivered to customer. So it's a win-win situation. I think they will be able to engage customers, and slowly and gradually, now that a lot of limitations have been removed from चूंकि पहले उनके पास एक माइक्रो फाइनेंस बैंक का लाइसेंस था, अब उनके पास डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस होगा, तो जो कुछ लिमिटेशन थी वो भी खत्म हो जाएंगे। दे विल बी एबल टू ग्रो मोर अग्रेसिवली, मोर ओपनली। So I think they'll be able to capitalize on it big time and grow from here further. I think just picking up on the use cases, कि you mentioned digital onboarding. अब इस तरह की और भी कुछ सहूलतें हैं जो आ रही हैं, there's IBFT, FT, there's bill payments, बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आई हैं. What role are fintechs playing in the market? Because we are seeing a lot of coordination between banks and fintechs, right? इस तरह की कौन से unique use cases आपके ख्याल में मार्केट में आ रहे हैं? देखिए, यूज केसेस तो जो सबसे बेसिक यूज केस है वो ये है कि आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट खोल सकें। ठीक है, अभी शायद जो बैंक्स ने जो ऑनबोर्डिंग लॉन्च की है उसके मुकाबले में जो इजी पैसा और जैस कैश की ऑनबोर्डिंग है वो शायद ज्यादा आसान है कस्टमर्स के लिए। उसको वो आगे जाके रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर मुझे 6 लैंग्वेजेस के अंदर अपनी ऑनबोर्डिंग को लॉन्च करना है तो आई टेक मे बी 1 year, एंड दे बीइंग मोर एजाइल माइट डू इट इन 3 months। दूसरा उसमें लेंडिंग की एक यूज केस है। तीसरा उसके अंदर ऑब्वियसली फंड्स मूवमेंट है जिसके अंदर बिल पेमेंट्स हैं, फंड ट्रांसफर्स हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद जाके आपकी बहुत सारी और जो सर्विसेज हैं वो वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज वो क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है रिमोट एरियाज के अंदर हमारे लोगों को। अगर नहीं है तो these fintechs can partner, these digital banks can partner with mutual fund industry and offer their products through their platform दे सकें। तो म्यूचुअल फंड्स बीइंग वन, ब्रोकरेज सर्विसेज एक और हो सकता है। इसी तरह से इंश्योरेंस के हमारे बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज अर्बन सेंटर्स तक महदूद है, तो वहां पर आपके पास काफी सारे इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको दे सकते हैं। सिमिलरली BNPL है, बहुत सारे आपके ऐसे कंज्यूमर गुड्स हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं डे टू डे हाउस होल्ड में। उसके ऊपर BNPL कैन बिकम अवेलेबल थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स साथ इंटीग्रेट हो सकती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ यूज केसेस जो कि आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स अभी उसको उस तरीके से यूज नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वो डिजिटल सर्विसेज के साथ फेमिलियर होता चला जाएगा, जैसे जैसे वो उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा इन डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो ये सारे सर्विसेज को फिर वो यूज करना शुरू कर दें। So I think this is how it's going to grow. But the first step, of course, is going to be digital onboarding. और onboarding के बाद आपका deposit है, lending है, ये जो basic financial services हैं, and then slowly and gradually all of these use cases will start to pick up automatically, I think, with time. और आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स, अगर मैं लैंड कर रहा हूँ, आई नीड द कोलैटरल टू लैंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बेटर। तो डेटा का कितना बड़ा रोल है, इफ वी आर सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेस, राइट? हाउ बिग ऑफ अ रोल इज डेटा प्लेइंग? यार, डेटा का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा, क्योंकि जब आप डिजिटल की बात करते हैं तो आप एक लार्ज स्केल की बात करते हैं, और आप बात करते हैं कि जहां पर यू नॉट फिजिकली मीटिंग एंड असेसिंग कस्टमर्स, सो यू हैव टू रिलाई ऑन डेटा टू असेस कस्टमर्स।
अब जो कस्टमर है वो अपना जितना डिजिटल प्रिंट छोड़ा है, वो सारा का सारा आपने उसको एनालाइज करना है और आपने अपने कंपटीशन से बेहतर तरीके से एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 मिलियन लोगों को लेंड करना है, तो यू हैव टू पिक अप द बेस्ट ऑफ दीज 100 million people. So if I was to sort of अभी तक जो हम जर्नी लेके चले हैं, we started off with कि डिजिटल बैंक ये करता है, ईएमआई ये करता है, ट्रेडिशनल बैंक ये करता है, राइट, एंड we've gone a full circle जहाँ हम डेटा तक पहुंच गए हैं कि the actual use cases क्या आप डिजिटल बैंकिंग के products and services will be pitched through digital channels, right? And in order to do that you need to have the data to do it, right? Then becomes the question कि वो डेटा रखने की जो कॉस्ट है, अगर हम बात करें कि right now, and that's where sort of the regulator comes in from the infosec side as well, but the regulator also comes in from the point ke if you're storing loads and loads of data, which you will eventually, you'll have to, agar aap personas create kar rahe hain, customer segmentation kar rahe hain, right, उसके ऊपर रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ें हो गई हैं, बिकॉज नेचुरली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें, सो क्लाउड इज बिकमिंग अ नॉर्म. Whoever is sort of working in the digital banking landscape, whether it's a fintech or banking solution provider, वो भी अपनी जो solutioning है वो SaaS के हिसाब से लेके जा रहे हैं because of the cost that the bank has to bear अगर आप on premises पे जाते हो. तो उसके ऊपर if you could just shed light on that. हाँ श्योर यार, मेरे ख्याल है कि क्लाउड इज द वे टू गो। जिस तरह से आपका जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट महंगी होती चली जा रही है, और तो क्लाउड आई थिंक इज द फ्यूचर। और जो डिजिटल बैंक्स हैं, चूंकि उनके पास एक तरह से लिमिटेड कैपिटल होगा, तो उनको एक यू नो उनको डे वन पे वो जाके वो बहुत सारा, because they need to invest in many other areas. They can't just invest all of their funds in creating the infrastructure. So they will leverage on the cloud technology which is available, and then अब तो आपको regulator भी support करता है. So so I think वहाँ पर आप काफी बेहतर अपने सेटअप को और एक काफी अग्रेसिव तरीके से अपना सेटअप आप कर सकते हैं, काफी क्विकली कर सकते हैं. सिक्योरिटी और फिर उसके बाद आपका ये जो सारे कंसर्न्स होते हैं, ये भी वहाँ पर काफी बेहतर तरीके से एड्रेस होते हैं. Absolutely. Last question from my end. Meezan Bank has been the biggest success story in terms of digital banking in Pakistan, and you've of course superheaded that. So for anyone who's sort of young and wants to come into this landscape, whether it's fintech, whether it's a digital bank, whether it's a traditional bank, and just sort of think digital, what would your recommendation be for someone who's looking into a career in this particular space? Yeah, this space is very dynamic. I would say it's very competitive also. Very the way it is evolving, it's becoming more and more interesting with the with time. तो डेफिनेटली जो हमारा यंग टैलेंट है वो उसको यहाँ पर काफी काफी स्पेस मिलेगी टू शोकेस देयर टैलेंट. मेरा ख्याल है जो माइंडसेट आपको चाहिए वो यू नीड टू हैव अ गुड एनालिटिकल mindset. You need to have you know empathy and compassion for customers and the customer experience. और ये सारा, और जो एजिलिटी है और जो स्पीड है, और ये जिस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाते हैं, और वहां पर you need an entrepreneurial kind of mindset. So even though you would be working with a fintech or startup, or fintech like yourself, Hisab Kitab, mashallah, you guys are doing great job. But आपके जैसे और भी जितने fintechs हैं या digital banks हैं, the key thing is that you have to have a very innovative mindset. Competition is going to be very aggressive in this space, so you have to be very competitive in nature. I would say this is an exciting field. Young talent should definitely come here. Yeah, thank you, Shariq bhai, for your time, and I think that's about all from my end. I'll just sum up, sort of what we've discussed. I think it's a lot. I can't sum everything up, but I think just to sum it up, the digital banking space is extremely dynamic, requires a very entrepreneurial mindset. You have to be extremely innovative as well. And at the end of the day, it will be about pitching relevant products and services
to relevant customers. If I was to sort of sum up the whole, and whoever can sort of do that with the right kind of data. And of course, it's easier said than done because there's a lot of prerequisites that you've discussed in this podcast with us as well. But thank you again. And I think that's about all from our end. Thank you. Thank you, Hassan. Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you.